ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड रेंजेस का मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड और हाँ गाइस, आप सभी के लिए 10K सब्सक्राइबर होने के बाद एक Q&A वीडियो आने वाला है। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अपना क्वेश्चन जो है रेडी रखना, क्योंकि मैं कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डालूंगा। फिर उसके बाद आप सभी से मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप बता सकते हो, बाकी में वो वीडियो में आप सभी को उसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को जो आपका मॉडल होगा उसका बैकग्राउंड को पहले इरेज कर लेना है। ठीक है, तो हम इसको इरेज करने के लिए चलते हैं ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइस यहाँ पे हम अपनी लेयर को ऊपर कर लेंगे एंड अपनी लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद जाएंगे रेजर टूल में। एंड उसके बाद यहाँ पे हम ओपेसिटीज़ के मतलब कि जो हार्डनेस की हम अराउंड रखेंगे 90 तक। ठीक है, तो आप सभी को 90 तक रख लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम सेट कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस जो आपका साइज़ है वो अपने हिसाब से रख लेना है। एंड ऐसे हम फटाफट से बैकग्राउंड को इरेज कर लेते हैं। You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh,
एंड उसके बाद देना आपको पर्पल कलर में, ठीक है। पर्पल कलर में वैसे यार भोलेनाथ जी का जो हैंड है वो थोड़ा पर्पल हो रहा है, तो बट हम इसको प्लस में रखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर डन कर देंगे। एंड इसके बाद आप सभी को इसके नीचे वाले टूल में चले जाना है। फोटो की जो क्लियरिटी है आप सभी को उसको बढ़ा देना है। फोटो में जो विग्नेट है वो भी डाल देना है, ठीक है। एंड जो उसके बाद क्या करना है, आपको ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद चले जाना आप सभी को इस नीचे वाले टूल में। फोटो की जो शार्पनेस आप सबको इसको इंक्रीज़ कर देना है। एंड जो नोड डायरेक्शन है आप सभी को इसको बढ़ा देना है। एंड जो कलर नोड डायरेक्शन आप सभी को इसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और यार चैनल पर नए तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए